Hello and very warm welcome to once again your English buddy welcomes you. This is Manish Panti welcoming you once more. Friends, वर्ड्स के इस सीरीज में हम लोगों ने स्लैंग्स के बारे में पिछले एपिसोड में देखा था. इस बार हम फिर से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्लैंग्स का दूसरा पार्ट देखते हैं. स्लैंग्स मीन्स अपभाषा, अपभ्रंश भाषा. Slang is very common words and expressions which are commonly used in spoken language. Slang is generally used by a group such as young people, criminals and students. It stays in fashion for a short time. Slang एक ऐसी भाषा है जो एक खास समूह के लोग, विशेष रूप से स्टूडेंट्स या अपराध जगत के लोग या फिर यंग पर्सन्स जो हैं वो यूज करते हैं. और क्योंकि इसकी भाषा ऐसी होती है जिसमें काफी आम प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये एक सुसंस्कृत भाषा से इसका जो स्तर है वो उतना ऊंचा नहीं होता, तो इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए. स्लैंग इज इम्पोलाइट एंड इनडिसेंट, सो अवॉइड यूजिंग इट इन फॉर्मल सिचुएशंस एंड एग्जाम्स. विशेष रूप से औपचारिक परिस्थितियों में और परीक्षाओं में आपको इस भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए. So let's discuss some slangs in today's episode. First one is lemmy, L-E-M-M-E, जो कि let plus me का abbreviation यानी short form है. इसका एक एग्जाम्पल देखिए. Let me go. वैसा ही एक और एग्जाम्पल है give me, give plus me. Please give me a chance. Third word is see ya. आपने अक्सर सुना होगा, आप जब इंग्लिश मूवीज देखते हैं या कोई इंग्लिश मैगजीन पढ़ते हैं तो वार्तालाप के दौरान ऐसे शब्द यूज होते हैं. see ya, जो कि कॉम्बिनेशन है see plus you का. I'll see ya tomorrow. Got plus to. I gotta find a job soon. Gonna. Going plus to. Sheila is gonna join us today. Sixth word is water. What plus a. ये एक एक्सक्लेमेशंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जहां हम कोई विस्मय, आश्चर्य वगैरह प्रकट करते हैं, आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं. What a lovely place Ooty is. Seventh word is have to. Have plus to. You have to apologize. तुम्हें माफी माननी ही पड़ेगी. Has to. Has plus to. Present tenses में has third person singular के साथ यूज होता है. Let's see an example. Rita has to walk 2 kilometers. रीता को 2 किलोमीटर चलना पड़ता है. ought to. O-U-G-H-T, ought plus to. ought to. People ought to help the poor. 10th word is wanna. Want plus to. We wanna do something. Wants to. Wants plus to. थर्ड पर्सन सिंगुलर. अन्य पुरुष एक वचन का अगर सब्जेक्ट हो, जैसे इस केस में देखिए, मार्था वांट्स टू मीट हर. मार्था उससे मिलना चाहती है. What's up? What plus is plus up. What's up, dear? What is up का ये एब्रीविएशन है और स्लैंग भाषा में, अप भाषा में इसका प्रयोग बहुत ही प्रचलित है. What's up means क्या चल रहा है. What's up? What plus is plus her. What's the problem? What's is a combination of what plus is plus his. Example, what's his phone number?
इसी तरह कुछ शब्दों को ऑफ के साथ मिलाकर कुछ स्लैंग वर्ड्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज kinda, which is a combination of kind plus of. What kind of dish is this? ये किस प्रकार का व्यंजन है, कैसा व्यंजन है. Lodsa, combination of loads plus of. He has loads of talent. Lotta, lot plus of. The government is facing lot of difficulties. Otta, out of. Just get out of my room. The 19th word is lotsa, which is a combination of lots plus of. Lots of nations have cut ties with China. बहुत से देशों ने चीन से अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं. Sorta, sort plus of. They don't like this sort of behavior. उन्हें इस प्रकार का आचरण पसंद नहीं है. Typa, which is a combination of type plus of. That type of reaction is unacceptable to anyone. Front of, इससे एक स्लैंग बना है front. The tiger was right in front of me. The tiger was right in front of us. शेर बिल्कुल हमारे सामने था. Betcha, which is a combination of bet plus you. I betcha can't guess how much it means to me. एक इसी तरह का कॉम्बिनेशन है would plus you, जिसे स्लैंग में would ya. Let's see an example. So, what would you like in lunch? What plus do plus you. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Coulda, which is a combination of could plus have. You coulda informed the police. Mighta, which is a combination of might plus have. She might have accepted the offer. Musta, must plus have. We must have taken precautions. Shoulda, should plus have. Boss should have hiked my salary. And the last word is woulda, would plus have. If Neeraj had requested to his officer, he would have got leave. Should, would, could, must, ought to. इसके पहले मैंने आपको शुरुआत के जो एपिसोड्स थे इसमें मॉडल्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स का काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. आप उन्हें वीडियो को देख सकते हैं अपनी इस जानकारी को रिफ्रेश करने के लिए. And friends, I hope you have enjoyed today's episode, today's session with me. Slangs, as I said earlier, are very uncommon and informal words, so make sure you don't use them too often in formal situations. And with the promise to see you again in the next episode with some more interesting and exciting information, this is Manish Mahanti saying goodbye to you. Thank you. See you in the next video. And of course, like, share and subscribe to Your English Buddy.